हेलो दोस्तों, आज हम एक चैनल में आ गए हैं। चैनल का रील्स कंटेंट का प्रॉब्लम था। उस चैनल को भेज दिया था मोनेटाइजेशन ब्रांड रिव्यू के लिए, लेकिन उसका जवाब ही वापस आया था और वापस आने के बाद उसको अपील का ऑप्शन दिया गया है। और नाज़रीन, आप लोगों को बताएं कि इसका अपील करने का तरीका क्या है। नाज़रीन, अपील का वीडियो इस वीडियो के आखिर में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलो उधर से देख लीजिए वीडियो के एंड में। इसके अलावा जो अपील के जो कंडीशन होते हैं या कि उसके टर्म होते हैं, तो उसके बारे में हम ज़रूर इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। हमने इस चैनल का अपील का वीडियो बनाया और उसको अपलोड भी किया हुआ है और उसको अनलिस्ट भी किया हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को हम बताएं कि अपील के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसके नीचे जो आप लोगों के ये जो रिक्वायर्ड हैं ये तो पूरा होने चाहिए, जैसा कि सब्सक्राइबर तो पूरा होंगे तो लाजम, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और उसका वॉच टाइम भी जुड़ना चाहिए। और इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों का कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होना चाहिए। ये चारों चीज़ों के अलावा नाज़रीन, आप लोगों को अपील से पहले या अपील के बाद कोई वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई वीडियो को डिलीट करेंगे तो आपका अपील को मुस्तरद किया जाएगा और उसको नहीं सुना जाएगा। तो इसको मोर पे हम क्लिक करेंगे तो नाज़रीन, इधर अपील के बारे में हम लोगों को यूट्यूब खुद बताता है कि इधर आप लोग 7 दिन के अंदर अपने अपील का वीडियो को बनाएं और इसके अलावा अपने चैनल के मुताबिक हम लोग को अवेयरनेस दें कि आप लोग चैनल के वीडियो को कैसा क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को 20 सेकंड तक अपने चैनल का जो यूआरएल होता है तो उसको आप लोगों को शो करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को भी बताया कि अगर आप लोगों का अपील मुस्तरद हो गया तो फिर 30 दिन के बाद आप लोग रीअप्लाई का ऑप्शन जो आ जाता है तो आप लोग उधर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोग इधर देख लीजिए कि अपील का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। वो बोलता है कि अपील के लिए आप लोग जो वीडियो बनाएंगे तो वीडियो को उसके वीडियो के चैनल के मुताबिक बनाएं और अपने वीडियो को अनलिस्ट मतलब उसको ये पोस्ट करें। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को बता दिया यूट्यूब ने कि इसके बाद जो ही आप लोग अभी अपील करेंगे तो अपील के दौरान या अपील के बाद आप लोग अपने वीडियो को मतलब डिलीट नहीं करना चाहिए। इससे यूट्यूब का तरफ से फिर गलती को माना नहीं जाएगा, आपकी तरफ से गलती को माना जाएगा। अपील का ऑप्शन इसलिए नाज़रीन दिया जाता है कि यूट्यूब की तरफ से अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका वो लोग इजाला करेंगे और उसको ठीक करके आप लोग के चैनल को मोनेटाइजेशन करके भेज देंगे। अगर आप लोगों का तरफ से कोई गलती हुआ है तो फिर दोबारा आप लोगों को रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, तो उस टाइम आप लोग दूसरी स्टेप के अंदर जाके आप लोग ये काम को फिर अंजाम दे सकते हैं। मतलब अपने वीडियो को आप लोग ये दूसरा जो स्टेप आएगा तो इसके अंदर आप लोगों को एडिट और डिलीट सब कुछ का ऑप्शन दिया जाता है। यूट्यूब खुद बताता है आप लोगों को कि इधर आप लोग वीडियो को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहली ऑप्शन के अंदर आप लोगों को वीडियो डिलीट करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए यूट्यूब ने इधर साफ अल्फाज में लिख दिया है कि आप लोग कोई वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात आप लोगों के समझ में आया। अभी हम अपील के जो स्टार्ट अपील ऑप्शन है तो हम उसको क्लिक करेंगे। नाज़रीन, उसके क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिए कि इधर हम लोगों को यूट्यूब ने खुद बताया कि आप लोगों का 19 अप्रैल तक इसका टाइमिंग है और आप लोगों का जो वीडियो है वीडियो को आप लोग अनलिस्ट फॉर्म में अपलोड करना चाहिए और उसका जो यूआरएल होता है तो उसका यूआरएल को इधर पेस्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन, वीडियो का यूआरएल हमने कॉपी करके इधर पेस्ट किया है और जो ही आप लोग देख लीजिए नाज़रीन, इधर जो सबमिट का बटन है तो इस सबमिट के बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद नाज़रीन, आप लोग देख लीजिए कि इधर ये ऑप्शन दिया गया है और इधर यूट्यूब ने लिखा हुआ है कि हम 14 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिप्लाई का जवाब देंगे। और याद रखें, इधर फिर भी लिखा दिया गया है कि अपील के दौरान या अपील के बाद भी आप लोग कोई वीडियो को डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हैं। इससे आप लोगों को यूट्यूब सख्ती से मना कर रहा है कि कोई वीडियो को डिलीट करने का नहीं सोच लीजिए। तो चलो, हमने नहीं सोच लिया और हमने अभी ये चैनल है इसको अंडर रिव्यू के लिए भेज दिया। This is my channel and now I go customize channel and basic info, and after I show you my channel URL. This is my channel URL Baluchi Puting. Can you see?
channel, or this is my channel URL. I am working more time than YouTube, and I make this channel for my entertainment, and also I complete the watch time and monetize to my channel. But some days I see my channel is demonetized the notification. I am working the YouTube, and also some my video have problem. I making my video to music, edit to music in YouTube library, and now I'm go analytics and I show the YouTube my which videos have a problem. I also the changing the I go video editor, and then also changing this music with music library the YouTube. This is my proof. In all my video this have problem. I before the monetization I changing the all content wise to music YouTube library. Like this I edit this one, and now can YouTube see the coming library. This is my channel, and more my video I create like this. Now this my video is okay. I don't need to process again, but I show to YouTube. After this my content is original, and also I making YouTube stories and YouTube music and program to my YouTube channel for my viewers for entertainment. This one my videos I am take with the KineMaster the application. Now I open the KineMaster application. This is KineMaster application, and this is my video, and also I making this video with KineMaster and processing also for my viewers. This is my video, and also the making a music for my original music for my friend, and also people to programming together. I making the music for my some my video I making with YouTube free copyright music and downloading with YouTube library. I put to my video to processing, then after processing finish I to making with Google Chrome this upload my video. After this one I go the for thumbnail making Pixel Lab. I show the YouTube team now. This is a Pixel Lab application, and I select for YouTube thumbnail. This one many time I make authentic thumbnail for my YouTube channel. To YouTube for my videos I creating the thumbnail to HD for my YouTube videos, and then after I put to save this one high resolution and put my videos. After I using the YT Studio for my videos, title, thumbnail, tag, description, also all things I put for my I put the thumbnail for my YouTube channel videos. So I can YouTube understand my processing and my work. I am hard working and honest to YouTube channel. That why my appeal, please as soon as possible and enable my monetization for YouTube channel. Thank you. Goodbye YouTube team. बनाएं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कल का वीडियो के लिए इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हम कल एक नया वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।